My lovely students, welcome to Mathological. Let us start another practice session for questions on emotional intelligence. So first question, Shruti is struggling to balance her personal life and her demanding job. Which of the following strategies is least likely to help Shruti achieve a better work-life balance? Option A, setting clear boundaries between work and personal time. Option B, seeking support from friends and family. Option C, working longer hours to get more done. And option D, practicing mindfulness and relaxation techniques. ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि स्ट्रगलिंग टू बैलेंस हर पर्सनल लाइफ एंड डिमांडिंग जॉब विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज इज लीस्ट लाइकली टू हेल्प श्रुति अचीव अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस. तो सेटिंग क्लियर बाउंड्रीज बिटवीन वर्क एंड पर्सनल टाइप विल डेफिनेटली हेल्प. Seeking support from friends and family will also help her. Working longer hours to get more done will not be ensuring a better work-life balance. And practicing mindfulness and relaxation will also going to help her. So answer will be option C, the least likely option. Okay. Next question. You find out your favorite book has been turned into a movie, but the adaptation is terrible. How would you react? So your favorite book has been turned into a movie and adaptation is terrible. So what will be your reaction? Option A, write a scathing review online expressing your anger. Option B, keep your disappointment to yourself, avoiding any discussion. Option C, share your feelings with friends humorously, suggesting a so bad it's good movie night. And option D, demand a refund from the cinema, causing a scene. तो जो ऑप्शन सबसे पहले रिमूव कर रहे हैं वो कौन से? डिमांडिंग अ रिफंड फ्रॉम द सिनेमा, कॉजिंग अ सीन. डेफिनेटली ऑप्शन डी नहीं होगा. राइट अ स्कैथिंग रिव्यू ऑनलाइन एक्सप्रेसिंग योर एंगर, ऑप्शन ए भी नहीं होगा. बिटवीन बी एंड सी विच इज बेटर ऑप्शन? बी कह रहा है कीप योर डिसअपॉइंटमेंट टू योरसेल्फ, अवॉइडिंग एनी डिस्कशन व्हाटसोएवर. ऑप्शन सी कह रहा है शेयर योर फीलिंग्स विद फ्रेंड्स ह्यूमरसली, सजेस्टिंग अ सो बैड इट्स गुड मूवी नाइट. सो बिटवीन बी एंड सी इज अ बेटर ऑप्शन. तो सी शुड बी योर प्रॉपर रिएक्शन. ओके, ठीक है भाई, अपने इमोशंस को ही तो मैनेज करना है ना. सो दैट इज वाई सी विल बी बेटर ऑप्शन देन ऑप्शन बी, कीपिंग योर डिसअपॉइंटमेंट टू योरसेल्फ. Next question. You are considering a new business partnership with a company whose founder recently experienced a major personal loss, such as the death of a co-founder. What should be your primary consideration when deciding whether to enter the partnership? Option A, founder's ability to manage the business while coping with the loss. Option B, company's market reputation and potential for growth. Option C, emotional state of the founder and their resilience. Option D, the previous success and stability of the company. कौन सा ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होगा? देखो इंपॉर्टेंट सारे ही ऑप्शंस हैं. All options are worth considering. ठीक है, फाउंडर का एबिलिटी टू मैनेज द बिजनेस इज इंपॉर्टेंट. कंपनीज मार्केट रेपुटेशन एंड पोटेंशियल डेफिनेटली इंपॉर्टेंट. इमोशनल स्टेट ऑफ द फाउंडर एंड देयर रेजिलियंस इंपॉर्टेंट है. प्रीवियस सक्सेस एंड स्टेबिलिटी दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट. बट मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी द कंपनीज मार्केट रेपुटेशन एंड पोटेंशियल फॉर ग्रोथ. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विल बी ऑप्शन बी, प्राइमरी कंसिडरेशन व्हेन यू आर डिसाइडिंग अबाउट एंटरिंग द पार्टनरशिप. ओके, कि पोटेंशियल क्या है कंपनी का ग्रोथ में और मार्केट रेपुटेशन क्या है कंपनी की, दैट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोड बाई प्रीवियस सक्सेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कंपनी एंड देन अदर ऑप्शंस विल फॉलो. A colleague is upset because of a mistake made on a project, so what should you be doing? What would be your action? Ignore the situation and let the colleague deal with it. Ignoring the situation is never the solution. क्योंकि कंसर्न क्या है? colleague is upset because of a mistake. Option B, offer to help fix the mistake together. Seems genuine. Option C, suggest taking a break and discussing it later. Option D, tell the colleague to stop worrying and move on. तो A और D तो आंसर नहीं होंगे. बिटवीन B एंड C कौन सा बेटर ऑप्शन है? बेटर ऑप्शन विल बी ऑफरिंग टू हेल्प फिक्स द मिस्टेक टुगेदर. क्योंकि C में क्या कर रहे हैं? अवॉइड कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए डिले कर रहे हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने को. और बिटवीन B एंड C, B इज मोर अप्रोप्रिएट. So B should be the answer. Offering to help fix the mistake together. You are preparing a presentation for a critical meeting and get stuck on a specific section. So what should you do? Keep working on it until you figure it out on your own. Ask for help from a colleague or search for relevant resources online. Skip the difficult section and move on to the next part. Or option D, vent your frustration to everyone around you about how challenging it is. So definitely option D तो नहीं करना है, venting your frustration, बिल्कुल नहीं. Skip the difficult section and move on to the next part, ये भी नहीं करना है. Keep working on it until you figure out on its own, या फिर ask for help from a colleague or search for relevant resources online. Better option will be option B, asking for help or searching for relevant resources online. Then keep working on it until you figure it out on your own. Next question.
You visit your office and notice that your team members are looking quite demotivated. You want to lift their spirits and improve morale. Which of the following actions would most effectively achieve this? Purpose क्या है? Your team members are demotivated. You need to lift their spirits and improve morale. Option A, organize a spontaneous office dance party to lighten the mood. Option B, share a funny video or meme that might catch their attention and make them smile. Option C, tell an amusing story or joke that is relevant to their work experience. Or option D, ask them why they're feeling down and encourage them to talk about their feelings. Best option कौन सा होगा? Purpose क्या है? You want to lift their spirits and they are demotivated. So best option will be option D, asking them why they are feeling down. देखो A, B, C भी अच्छा option है, no doubt about that. But best option क्या होगा? Considering the situation, D will be most professional and best option. So that they are able to vent out कि क्यों वो demotivated है, talking them into that discussion, encouraging them to talking about their feelings and then improving that particular situation. That will be the best option, option D. Because A, B और C में तुम क्या करो, वहां से डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो उनको. तो डिस्ट्रैक्शन तो ठीक है, बट द पॉइंट इज कि उससे उनका जो डिमोटिवेशन है वो रिजॉल्व तो नहीं होगा ना. मे बी टाइम बीइंग के लिए उनको ध्यान ना रहे, ठीक है, वो कहीं और इंगेज हो गए, बट बाद में ये चीजें वापस से आएंगी. बट ऑप्शन डी इज सॉल्विंग दैट पर्टिकुलर इशू बिकॉज यू आर एड्रेसिंग दैट पर्टिकुलर इशू. दे आर टॉकिंग अबाउट देयर फीलिंग्स एंड हेंस दैट विल lighten them up. Okay. Next question. Your daughter has just lost a competition she worked hard for. She is visibly upset. So what should you be doing? Telling her there is always next time and to not be too upset. Hug her and say it's okay to be sad but you are proud of her effort. Option C. Critique her performance to help her do better in the future. Or option D. Suggest she shouldn't have expected to win in the first place. Definitely option D तो बिल्कुल नहीं होगा. Suggesting that she shouldn't have expected to win in the first place, ये तो बिल्कुल नहीं करोगे. Option A, tell her there is always next time and to not be too upset. Seems right. Option B, hugging her and saying it's okay to be sad but you are proud of her effort. So you are accepting her emotions, ठीक है, accepting her emotions and then saying that you are proud of her effort so that she feels encouraged and hugging her, accepting her. Option C, critiquing her performance to help her do better in the future. अब ये option बाद के लिए तो अच्छा हो सकता है, critiquing her performance, but right now when she is visibly upset, this is not the right choice. So option C will not be the answer. Answer will be option B. Option A में क्या कर रहे हो? You are telling her that there is always next time, fine, but not be too upset. She is upset already, so this will not help her emotions. Next question. You catch a young, visibly scared thief trying to steal from your home. He is holding a family photo. What do you do? अब एक thief है, but thief के साथ में और भी चीजें mentioned है. He is young thief, visibly scared thief, and he is trying to steal from your home. He is holding a family photo. So what would you do? Option A, yell to scare him away, making sure he drops the photo. Option B, approach him calmly, ask him questions to understand his situation before deciding what to do. Option C, call the police immediately to have him arrested without asking any questions. And option D, take back the photo forcefully and punish him yourself. Definitely option D तो नहीं करोगे, punishing him yourself. ठीक है, between option A, B and C, A भी नहीं करोगे, yelling to scare him away, making sure he drops the photo. B और C में से कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? देखो, he is a thief definitely, but he is a young visibly scared thief. तो इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना है. If you are emotionally intelligent person, तो you will not be ignoring these cues as well. That he is a young person, he is visibly scared thief, तो शायद वो प्रोफेशनल चोर नहीं है, स्टील करने की कोशिश कर रहा है, he is holding a family photo. तो क्या करोगे? अब ऐसे में देखो ऑप्शन बी और सी को ध्यान से पढ़ो. ऑप्शन बी कह रहा है अप्रोच हिम कामली, आस्क हिम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन. तो पहले तुम यू आर अप्रोचिंग हिम कामली एंड आस्किंग हिम क्वेश्चंस बिकॉज ही इज ऑलरेडी विजिबली स्केयर्ड, तो यू हैव नथिंग टू बी थ्रेटन्ड अबाउट. आस्क हिम क्वेश्चंस टू अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन एंड देन आफ्टर दैट बिफोर डिसाइडिंग व्हाट टू डू, तो डिसाइड करने से पहले उससे क्वेश्चंस पूछो. अप्रोच हिम कामली एंड अंडरस्टैंड हिज सिचुएशन, उसके बाद में डिसाइड करो कि पुलिस को कॉल करना है या क्या करना है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज नॉट सेइंग दैट यू विल नॉट बी कॉलिंग द पुलिस और यू विल नॉट बी चूजिंग ऑप्शन सी, बट ऑप्शन बी इज जस्ट सेइंग बिफोर डिसाइडिंग व्हाट यू हैव टू डू यू मस्ट नो द सिचुएशन. तो टू नो द सिचुएशन यू हैव टू टॉक टू हिम. So that is why option B is better option and more comprehensive option as compared to option C, and hence you will be choosing option B. ठीक है, option B फिर से एक बार रिपीट करता हूं, does not mean कि पुलिस को कॉल नहीं करोगे. It only means that before you decide to act, you should be knowing the situation, and for that option B is better option. क्या ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? ठीक है, कि ऑप्शन C और B के बीच में you will be choosing B because B में जो सेकंड हाफ लिखा है before deciding what to do, you should be knowing the situation, so for that you will be choosing option B. Okay.
Next question. You are training for a marathon and have 10 weeks to prepare, but you've only managed to run 10 miles in the first 2 weeks due to lack of motivation. So what should be your next step? Next step क्या होगा तुम्हारा फिर? Accept that you might not be ready for the marathon and withdraw. तो withdrawing is never the right action. Withdraw तो नहीं करोगे. हाँ, टाइम जरूर तुम्हारे पास कम बचा है. ऑप्शन बी, कीप द सेम ट्रेनिंग शेड्यूल एक्सपेक्टिंग मोटिवेशन टू किक इट लेटर. अब ये भी ठीक नहीं है. सेम ट्रेनिंग शेड्यूल रखोगे, सेम कहानी रहेगी. 10 माइल्स ही रन कर पाए हो इन फर्स्ट 2 वीक्स में और तुम्हें मैराथन दौड़ना है. डेफिनेटली अपनी प्रैक्टिस को और इंप्रूव तो करना पड़ेगा. ऑप्शन सी, रीअसेस योर ट्रेनिंग प्लान, सेट वीकली माइलस्टोन्स एंड इनकॉर्पोरेट मोटिवेशनल टेक्निक्स लाइक रनिंग विद अ ग्रुप एटसेट्रा. ऑप्शन डी, स्विच टू अ डिफरेंट स्पोर्ट सिंस रनिंग इजंट वर्किंग आउट. तो ऑप्शन डी भी, अवॉइडिंग द सिचुएशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है. बिटवीन बी एंड सी, विच वन इज बेटर? C is better option. Keeping the same training schedule will not solve the problem, but reassessing your training plan, setting weekly milestones, and incorporating motivational techniques because you are feeling demotivated. So option C is the best option. Okay. Next question. After interviewing several candidates, one stands out for their technical skills but seems to lack team spirit. You need to select someone for a collaborative team. So what would you do? Choose this candidate based solely on their technical prowess. Discuss with your team how to integrate this person into the group, focusing on their strengths. Decide to pass on this candidate and look for someone with better interpersonal skills. Offer them the job, but with a warning about the need to improve their interaction. So which will be the right answer? So you've already interviewed several candidates and one particular candidate stands out for their technical skills. ठीक है, तो stands out for their technical skills. So he is definitely a good candidate, but the problem is he is technically good but seems to lack team spirit. And you need to select someone for a collaborative team. तो choosing this candidate based solely on their technical prowess will not be the right answer because तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें एक candidate चाहिए for a collaborative team. तो option A, solely based on their technical prowess, तो सही नहीं होगा. Option B, discussing with your team how to integrate this person into a group, focusing on their strengths, seems the right option. Option C, decide to pass on this candidate and look for someone with better interpersonal skills, seems also good. Option D, offering them the job but with warning about the need to improve their team interaction. अब warning वाला फेस तो प्रॉब्लम वाला है, तो डी भी आंसर नहीं होगा. बिटवीन बी और सी कौन सा चूज करोगे? अब देखो, कोई भी कैंडिडेट कभी भी कोई टीम सेलेक्ट करेगी या कोई ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करेगी तो ऑलवेज एक कैंडिडेट उनको मिलेगा जिसके अंदर कुछ प्रोज होंगे, कुछ कॉन्स होंगे. सब कुछ बेस्ट फिट तो कभी नहीं मिलेगा लाइफ में. लाइफ में कुछ भी तुम सेलेक्ट करोगे तो कॉम्प्रोमाइजेस तो करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा. अब तुम्हें कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना है, कहाँ पे नहीं करना है, दैट डिपेंड्स. ठीक है, इवन इफ फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडिडेट हैज एक्सेप्शनल टेक्निकल स्किल्स, कोई और कैंडिडेट मिलेगा, ही माइट हैव एक्सेप्शनल टीम स्पिरिट, बट अगर टेक्निकल स्किल्स नहीं होगी तो क्या करोगे उसका? ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ टीम स्पिरिट से तो काम नहीं चलेगा, दोनों चीजें चाहिए. सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी इज अ बेटर ऑप्शन. Discussing with the team how to integrate this person into the group and focusing on their strengths, that would be the best option. Okay, because deciding to pass on this candidate, you will be losing that opportunity कि तुम इस candidate को अपनी team में incorporate कर सकते हो. So that opportunity you will be losing if you are passing on that candidate. Isn't it so? ठीक है भाई, तुम मिस नहीं करना चाहोगे ना ऐसे वैल्यूएबल टेक्निकल स्किल्स वाले पर्सन को. दैट इज वाई ऑप्शन बी शुड बी बेटर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग अ वीडियो कॉल योर कैट जंप्स ऑन योर कीबोर्ड एंडिंग द कॉल. सो हाउ डू यू हैंडल इट? पैनिक एंड कॉल बैक इमीडिएटली, apologizing profusely, laugh it off, send a funny message explaining and reconnect. Option C, ignore it hoping they'll call back without you mentioning it. And option D, blame your cat in the next call showing frustration. So option D तो आंसर नहीं होगा, blaming your cat in the next call showing frustration. Option A, panic and call back, this will also not be right answer because you are not able to manage your emotions in that case. B और C में से better क्या है? B is saying laugh it off, send a funny message explaining and reconnect, and C is saying ignore it. तो better laughing it off, sending a funny message will be better than ignoring. Option B should be the appropriate response. Okay, clear है? Next question. You are at a silent retreat, but you accidentally let out a loud sneeze. So how do you react? अब silent retreat है, but वहां पे तुमने क्या किया? You accidentally let out a loud sneeze. So how do you react? Option A, apologize loudly to everyone, drawing more attention. So definitely since this is a silent retreat,
So option A, apologizing loudly, will not be the right response. Option B, pretend it did not happen and maintain your silence. Okay. Option C, smile sheepishly, acknowledge the mistake with a small gesture and continue in silence. And option D, laugh out loud, breaking the silence further. तो option D भी आंसर नहीं होगा. Between B and C, B is saying pretend it did not happen and maintain your silence, but it has actually happened. तो pretend करने से better क्या है? Accept करना that it has happened. Smiling sheepishly smiling का मतलब क्या हुआ कि you are accepting, ठीक है, हंस नहीं रहे हो अपनी सिचुएशन पे, यू आर जस्ट एक्सेप्टिंग आउट ऑफ एम्बेरसमेंट कि हो गया गलती, एंड एक्नॉलेजिंग योर मिस्टेक विद अ स्मॉल गेस्चर. अब गेस्चर कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो बिकॉज साइलेंट रेटेड है, एंड कंटिन्यूइंग इन साइलेंस. तो सी इज बेटर ऑप्शन इन कंपेरिजन टू बी. In comparison to pretending that it did not happen, smiling sheepishly, acknowledging the mistake with a small gesture, and continuing in silence seems to be the better option. Okay, so option C will be the answer. Clear है? Next question. During an interview, a candidate becomes visibly nervous and stumbles over their words. So as the interviewer, you will be doing what? क्या तुम्हारा action होगा? Candidate is visibly nervous and stumbles over their words. Option A, quickly wrap up their interview to avoid further discomfort. Option B, gently reassure them, give them a moment to compose themselves and continue. Option C, ask more challenging questions to see if they can handle pressure, जो कि generally होगा. Option D, make a note to reject them due to poor performance under stress. तो क्या करोगे? Which should be the best option? Quickly wrapping up? No. Asking more challenging questions? Definitely no. Does not show that you have high EQ, yeah, you are empathetic to the person you are interviewing. Option D, making a note to reject them due to poor performance under stress. Yeah, option D, gently reassuring them, giving them a moment to compose themselves and continue. B should be better option in comparison to D. Gently reassuring them, giving them a moment to compose themselves, give them a glass of water, and then continue your interview. That should be better option. Okay. You are a new employee at a hotel and a guest is upset because their room is not ready on time. So what is the best way to handle the situation? Best way to handle this situation. The guest is upset because their room is not ready on time. Option A, apologize sincerely, offer a complimentary service or upgrade, and work on finding a solution while keeping the guest informed. Option B, apologize and state that these things happen, hota hai, chalta hai, duniya hai. Suggest the guest waits in the lobby until the room is ready and avoid making any promises. Option C, apologize and explain how busy the hotel is without offering any further assistance. Or option D, apologize, offer a complimentary service or upgrade, and blame the housekeeping staff for the delay. Worst option कौन सा है? Option C is the worst option, apologizing and explaining how busy the hotel is without offering any further assistance. यहाँ पे तुम प्रॉब्लम तो सॉल्व कर नहीं रहे हो, तो ऑप्शन सी इज द वर्स्ट ऑप्शन. प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि गेस्ट इज अपसेट बिकॉज द रूम इज नॉट रेडी. तो रूम को टाइम पे रेडी होना चाहिए था, नहीं है, इसलिए अपसेट है. तो ये प्रॉब्लम तो तुम्हें सॉल्व करना है. ऑप्शन डी, अपोलोजाइज, ऑफर अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस अपग्रेड एंड ब्लेम द हाउसकीपिंग स्टाफ फॉर द डिले. अब ऑप्शन डी में प्रॉब्लम क्या है? यू आर ब्लेमिंग द हाउसकीपिंग स्टाफ फॉर द डिले. अपोलोजाइजिंग ठीक है, बट ऑफरिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस अपग्रेड, क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है? तो प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन ही नहीं हुआ. दैट इज वाई ऑप्शन डी विल ऑल्सो नॉट बी राइट आंसर. कुछ चीजें ठीक है, यू आर अपोलोजाइजिंग, यू आर ऑफरिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस, बट आर यू सॉल्विंग द प्रॉब्लम? नो, यू आर नॉट. एडिशनली यू आर ब्लेमिंग द हाउसकीपिंग स्टाफ फॉर द डिले. ठीक है. ऑप्शन बी, अपोलोजाइज एंड स्टेट दैट दीज थिंग्स हैपन, सजेस्ट द गेस्ट वेट्स इन द लॉबी अंटिल द रूम इज रेडी एंड अवॉइड मेकिंग एनी प्रॉमिसेस. ठीक है. एंड ऑप्शन ए क्या कह रहा है? अपोलोजाइज सिंसियरली. अपोलोजाइज तो सब में कर रहे हो, बट यहाँ पे सिंसियरली अपोलोजाइज कर रहे हो. ऑफरिंग अ कॉम्प्लीमेंट्री सर्विस और अपग्रेड एंड वर्किंग ऑन फाइंडिंग अ सॉल्यूशन व्हाइल कीपिंग द गेस्ट इन्फॉर्म्ड. बेस्ट ऑप्शन among the given options, working on finding a solution while keeping the guest informed. Option A should be the best way to handle the situation. Okay. Your best friend forgot your birthday but remembered their pets. How do you feel and act? तुम्हारा बर्थडे भूल गया बट अपने पेट का बर्थडे उसको याद है. So how do you feel and act? Option A, feel deeply hurt, confront them angrily about it. Pretend it doesn't bother you but hold a grudge. Option C, laugh it off, send them a funny reminder for next year and plan a belated celebration. Or option D, ignore them for a while to make them feel guilty. Which one should be the best option? Best option will be option C, laughing it off, sending them a funny reminder for the next year and plan a belated celebration. Holding a grudge or making them feel guilty or confronting them angrily is not the right response. Right response will be option C. Next question. You are at a family gathering and your shy niece
seems overwhelmed by the crowd, hiding behind her parents. How do you encourage her participation while respecting her comfort level? You are at a family gathering. Your shy niece seems overwhelmed by the crowd, hiding behind her parents. So how do you encourage her participation while respecting her comfort level? Option A, insist she joins the games with the other children. यहाँ पे तुम क्या करो? Insist कर रहे हो. तो are you respecting her comfort level? No, you are not. Option B, leave her alone thinking she'll join in when she is ready. Option C, sit with her quietly, engaging in a one-on-one conversation about something she likes, slowly introducing her to small group activities. Seems fair. Option D, tease her about being shy in front of everyone, trying to make light of the situation. अब option D में क्या करो? Already she is shy, she is feeling overwhelmed, और तुम क्या करो? Tease कर रहे हो उसको about being shy in front of everyone. तो D भी unacceptable है. बी और सी में से बेटर क्या है? बी में यू आर लिविंग हर अलोन, सी में यू आर पॉजिटिवली एंगेजिंग विद हर, सिटिंग विद हर, क्वाइटली एंगेजिंग इन अ वन ऑन वन कन्वर्सेशन फर्स्ट अबाउट समथिंग दैट शी लाइक्स. तो शी, अब पहले उसके कंफर्ट जोन में तुमने बात किया, ठीक है, डिस्कसिंग विद हर वन ऑन वन अबाउट थिंग्स दैट शी लाइक्स एंड देन स्लोली इंट्रोड्यूसिंग हर टू small group activities. So C is the best option among the given ones, and that should be your response to encourage her for participation. Okay. Next question. You are a chef in a high-end restaurant where a regular customer has left a negative review online criticizing your signature dish. So what should you be doing? Option A, respond publicly with a defensive comment explaining why the customer is wrong to maintain your restaurant's reputation. Option B, try to understand the customer's perspective, privately reaching out to offer a complimentary meal and a chance to rectify the situation. Option C, ignore the review, believing that one negative comment won't affect your business. Or option D, confront the customer next time they visit, demanding they retract their review in person. कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? Best option will be trying to understand the customer's perspective. Why they felt what they felt. Why they left a negative review. There must have been something wrong with that particular scenario. Privately reaching out to offer a complimentary meal and chance to rectify the situation. Option B is the best among the given ones. ठीक है, इग्नोर तो नहीं करोगे. Confrontation and demanding to retract their review without asking कि what went wrong. ठीक है, you are not asking what went wrong. You are not trying to solve the problem. Exactly issue क्या हुआ, उस issue को handle करने के बजाय you are asking them to retract their review. So that is not the right response. Responding publicly with a defensive comment is also not the right response. Best option is trying to understand the customer's perspective, reaching out to them, offering a complimentary meal, and asking for a chance to rectify the situation. Okay. Next question. A friend shares a personal problem with you, but you are distracted by an important work email. So what will you be doing? Option A, quickly skim their story while typing your email response. अब यहाँ पे क्या, तो यू आर आस्किंग देम टू स्किम देयर स्टोरी व्हाइल यू आर engaged in your work email, typing your email response. तो इनको तो क्या कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो तुम एक तरह से. यू आर नॉट गिविंग him full attention, your friend full attention while he is sharing a personal problem. Option B, asking them to wait a moment while you finish your email. Option A तो देखो आंसर नहीं होगा. Option C, put your phone away and listen attentively to their problem. And option D, tell them you'll listen better once you are done with work. तो ऑप्शन डी में कह रहे हो बाद में आना, बाद में करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अपना काम कर लेता हूँ. तो डी भी आंसर नहीं है. बिटवीन बी एंड सी क्या चूज करोगे? बी कर आस्क देम टू वेट अ मोमेंट व्हाइल यू फिनिश योर ईमेल. एंड ऑप्शन सी इज सेइंग पुट योर फोन अवे एंड लिसन अटेंटिवली टू द प्रॉब्लम. तो फ्रेंड इज शेयरिंग अ पर्सनल प्रॉब्लम एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड बाय एन इंपॉर्टेंट वर्क ईमेल. तो वर्क ईमेल भी इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड भी इंपॉर्टेंट है, बट प्रेफरेंस किसको दोगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग. So for the time being, you'll be putting your phone away and listening attentively to their problem. That should be the right response. Okay. Clear? Next question. You are a diplomat at an international conference where negotiations have stalled due to cultural misunderstandings. So what would you do? You are a diplomat at an international conference and negotiations have been stalled due to cultural misunderstandings. So what should be appropriate response from your end? Insisting on following your country's negotiation protocol, ignoring cultural nuances to maintain efficiency. So you will not be ignoring cultural nuances. This will not be the right answer. ठीक है, इग्नोर करोगे कल्चरल नुआंसेस को तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व होगा? उसी वजह से नेगोशिएशंस स्टॉल हो गए हैं. So that is why option A is not the correct response. Option B, understanding the cultural differences, understanding the differences, finding the common ground and suggesting a break for cultural exchange activities seems fair. Option C, becoming frustrated and express your irritation, definitely not. Option D, withdraw from the negotiation feeling overwhelmed by the complexity of cultural dynamics, definitely not. Option B is the best option.
understanding the differences, finding the common ground, and suggesting a break for cultural exchange activities to again resolve the negotiations. Okay. Next question. A colleague has recently gone through a difficult breakup and is feeling heartbroken. As someone trying to console them, which of the following approaches would demonstrate high emotional intelligence and offer support in a more compassionate and empathetic way? Option A, breakups are a part of life and we all have to go through them. You will find someone else soon. Seems reasonable, but क्या ये सही रिस्पॉन्स है? बाकी ऑप्शंस को चेक करते हैं. ऑप्शन बी, आई कांट इवन इमेजिन द पेन यू आर गोइंग थ्रू बट रिमेंबर टाइम हील्स ऑल वाउंड्स, यू विल फील बेटर सून. ठीक है. ऑप्शन सी, आई नो दिस इज इनक्रेडिबली हार्ड फॉर यू एंड इट्स ओके टू फील दिस वे, टेक ऑल द टाइम you need and I am here if you need anything. And option D, you are lucky that you have friends to support you, focus on them, it will help you get over this. So which should be the best response? अब देखो, breakups are the part of life, ठीक है, सत्य वचन है, बट क्या उस समय अच्छा लगेगा? We all have to go through them, ठीक है, you will find someone else soon, may be true, of course, ठीक है, बट क्या उस समय इससे बेटर रिस्पॉन्स हो सकता है? ऑप्शन बी, आई कांट इवन इमेजिन द पेन यू आर गोइंग थ्रू. तो ऑप्शन बी में यू आर एक्नॉलेजिंग द पेन दैट द पर्सन इज गोइंग थ्रू. ऑप्शन ए में यू आर नॉट एक्नॉलेजिंग दैट पेन. तो ऑप्शन ए से बेटर ऑप्शन है ऑप्शन बी. बट रिमेंबर टाइम हील्स ऑल वुंड्स, यू विल फील बेटर सून. ठीक है, समय सारे घाव भर देगा तो जल्दी अच्छे हो जाओगे. बट आई कांट इवन इमेजिन द पेन यू आर गोइंग थ्रू, यू आर एक्नॉलेजिंग द पेन, दैट इज द पॉजिटिव थिंग अबाउट ऑप्शन बी. ऑप्शन सी, आई नो दिस इज इनक्रेडिबली हार्ड फॉर यू, अगेन यू आर एक्नॉलेजिंग that the situation is difficult for them and it's okay to feel this way, accepting them, ठीक है, with their pain, take all the time you need, you are giving them all the time that they need, and also saying that you are here if they need anything. So हर तरह से बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है, accepting their feelings, saying to them that whatever they are feeling that is okay, you are with them, they can take all the time they need to vent out their emotions, and if they need your help, you are there to help. So C is better than B. Option D, you are lucky that you have friends to support you, focus on them, it will help you get over this. अब यहाँ पे तुम बता रहे हो कि एहसान मानो इस बात का कि तुम्हारे दोस्त हैं तुम्हारे पास, ठीक है, फोकस करो उन पे और बाहर निकल जाओगे अपनी सिचुएशन से. तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. Accepting them in the situation as they are right now, giving them all the time that they need, and offering help as much as possible. तो बेस्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी among the given options. क्या ये क्लियर है? ठीक है, ऑप्शन सी शुड बी द आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स. सो दीज आर ऑल द क्वेश्चंस इन दिस पर्टिकुलर सेशन. और आई बिलीव कि जो भी डिस्कस किया वो समझ में आएगा. किसी भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है, कोई डिस्कशन करना है तो कमेंट जरूर मेंशन करना एंड वील डेफिनेटली डिस्कस दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके. और अगर सेशन अच्छा लगा है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल. और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर देना. यू कैन ऑल्सो ज्वाइन द टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल मैथोलॉजिकल, और you can message me on Telegram at ADITYKT for any questions or queries or concerns. That's all for this session. Bye bye. Take care and keep running.